मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, तब से लेके इंटरव्यू तक हम्म, लोग थोड़ा सा ना एक लेजरली वे में उसका प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू का. दे डू नॉट टेक इट वेरी सीरियसली. सीरियसली। आई थिंक इंटरव्यू इज अ फेज वेयर 3 कैंडिडेट देते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट होता है. सो एक खुशी की स्माइल होती है, सो 2 आंसू भी होते हैं आपके बाजू. सो वो कैंडिडेट अक्सर रियलाइज नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है वहां पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए. इंटरव्यू स्किल्स करना आर आल्सो चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट. So, hello everyone, welcome to iExamB. Today we have a special guest with us, Ojas, and a successful candidate for the NABARD Grade A examination जो कि 2023 में हुआ, and ओजस महाराष्ट्र. आज हम ओजस की जर्नी के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई. काफी रोमांचक है, बट उन्हीं से सुनेंगे. और ये देखते हैं कि जो हमारे इस साल स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं उनको क्या क्या इसमें टिप्स मिलने वाली हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ओजस, आपको मेरी तरफ से, iExamB फैमिली की तरफ से. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वार्म विशेस एज वेल एज फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. Yes, definitely, and it is, now हमारा भी इसमें सौभाग्य है कि आप आए. बट उसके आगे हम चलेंगे, बट मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि हाउ डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर रिजल्ट, बाय योर फ्रेंड्स और यू चेक बाय योर ओन? Actually, when the result came, हम्म. I was on a call with someone, हम्म. and after the call, हम्म. someone's message came कि result क्या आया. तो मैंने सोचा अरे हम्म. result लग गया. And my mother was with me. We sat on our, we sat in our home, and I asked mother, okay, let's see what it is. My mother was slightly, you know, fearful as well कि यार आप पिछले बार जैसा ही तो नहीं बोलोगे कि इस बार भी नहीं हाँ. हुआ. बहुत सारे एग्जाम्स देते रहते. बट फॉर्चुनेटली वहां नाम दिखा, एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर आवर फैमिली. अ वेरी हैप्पी मोमेंट. डेफिनेटली. अच्छा, तो आप मदर के साथ में ही थे, तो आपने उन्हीं को डेफिनेटली इन्फॉर्म किया होगा. डेफिनेटली डेफिनेटली. कि सो कैसा लग रहा है जब से रिजल्ट आया? अभी 21st को, आई थिंक फरवरी में रिजल्ट आया था ना? या तो इट्स तब बीन से कैसा ऑलमोस्ट लग रहा है? 3-4 वीक्स आई थिंक. और बहुत अच्छा लग रहा है सर. एक बर्डन थोड़ा सा निकल गया ऐसे लग रहा है. एंड नाबार्ड इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क. सो इट्स अ वेरी गुड जॉब, आई कि सो थिंक. अभी आप अपनी हमको या फिर हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि अपनी जो आपकी एजुकेशन वाली जर्नी है, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि हमारी एजुकेशनल जर्नी तब ओवर होती है जब हम हमें कोई जॉब मिलती है, तो इस बीच का आप पार्ट बताएंगे सो दैट कि स्टूडेंट भी समझ सकें वो अभी किस पार्ट में है जनरली. सर आई पास्ड आउट माय 12th स्टैंडर्ड. मैंने 2016 में पास आउट किया. आफ्टर दैट 2016 से लेकर 2019 तक ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में. बट ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आल्सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. So from 2016 to 2024, I have been preparing for civil service exam and other such opportunities. Mm-hmm. So within it, NABARD was also one of them. So So this year. I think your graduation was also your choice because you were preparing for UPSC. So NABARD Definitely. was your choice or what? How you came to know about this examination? So I came to know of NABARD this year. Actually, I forgot to tell that I pursued a postgraduate diploma in rural development as well in 2022. Okay. Yeah. I forgot to mention that. So during that course, there was a slight, idea of NABARD, but I came to know of Mhm. the exam and other details of it in this year, 2023. आफ्टर दैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भर दिया गया, और फिर एग्जाम्स के पेजेस चले सर उसी में. So this was your first attempt for NABARD. यस, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. Okay. So that's why I, said कि this will be very interesting uh, story because जो भी student first time attempt करते हैं ना, generally उन्हें ही लगता है कि these kind of examination cannot be cracked in one attempt. So आपसे डिस्कस करके या बात करके पता चल रहा है कि ऐसा भी नहीं है. सो बट आपके बारे में जानेंगे पूरा कैसे आपने प्रिपेयर किया. सो यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी. सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन सो फार एंड व्हाट वाज द आउटकम? सर आई टुक इन 3 attempts in which I wrote 2 mains. ओके. या सो आफ्टर दैट, सी नाबार्ड का जैसे आपने कहा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, दिस इज वेरी ट्रू. बट द थिंग इज, हम्म. फॉर दैट ऑल्सो आई प्रिपेयर्ड अराउंड 7 years, 7.5 years for यस. that. So that base was थोड़ा सा strong enough for me to push me towards NABARD, or to pull me towards NABARD, you can say. तो वो बेस डेफिनेटली. होना बहुत जरूरी.
Definitely, and specifically for the descriptive writing, Definitely. which comprises of 200 marks, descriptive English as well as ARD and ESI. And because, as you said, you did diploma in rural management also. So I think that Rural. that was also, yes, rural development. So that was also helpful for your examination. Yes, 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 definitely. Okay, so how you prepared for the prelims, as you mentioned, I think with UPSC. So how you prepared or what you focus, because here that there are different subjects in the prelims. So how you focus those? Sir, honestly speaking, I did not prepare dedicatedly for NABARD का prelims, Hmm. but जो existing knowledge था agricultural and rural development का, उसके साथ economic social issues जो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एंड ऑल, Mm-hmm. जनरल नॉलेज होता है, प्लस ये तो करंट में आपके मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में कवर हो गई थी, बट अलॉन्ग विद दैट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इंग्लिश है वो थोड़ा स्कूल टाइम से ही फॉर्चुनेटली आई विल से दैट माय स्कूलिंग वाज गुड, सो वो मेरे प्रिपेयर्ड थे. नाउ दिस विल सीम वेरी स्ट्रेंज टू Okay. से कि तब का आपको याद कैसे है, बट द बट आई विल से इट वेरी नेचुरली सर, आई हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, 12th में भी मेरा मैथमेटिक्स था. आई एम नेचुरली Okay. इंटरेस्टेड इन इट. व्हेनेवर आई सी समथिंग लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट इज दिस, then I compare it Okay. with last year, and that I have a Okay. genuine interest. Yeah, this is the That kind truth. of studies. Yeah, yeah, yeah. So I think that helped me very much. But nevertheless, I prepared for quant and other things 2-3 years ago. जब यूपीएससी में सीसेट का भी पेपर होता है, सो उसके लिए She said. थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, थोड़ी बहुत मेहनत जरूर की. And NABARD is more about making the balance in 8 subjects rather than कि हम बहुत किसी में मेरिट लेकर आए किसी सब्जेक्ट में. Then जैक how ऑफ you ऑल ट्रेड्स, focus? मास्टर ऑफ Yes, नन. I always say this line in my videos. Jack of all trades. And what about your means ARD, ESI, and descriptive English? सर जब फेज 1 का रिजल्ट आया, सो देयर वर ओनली 15 days आई थिंक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेज 2, दैट इज मेंस. And Yes. within the small span of time, it was very difficult for me to, it was a very less time span. Hmm. Still, as I told, that my descriptive skills are slightly good or better, I can say. Therefore, and English skills are also decent. So I thought that Mhm. out of the 200 marks of mains, 150 marks are in my hands. And having studied rural development before, so I was pretty, not proficient, but yes, pretty decent in that as well. So I focused on the descriptive part, and objective part में I know that उतना अच्छा शायद performance ना हो पाए, so I left it to the fate. So that was the strategy. Yeah. So, जब आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया था ना, उसके बाद क्या लगा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि रिजल्ट तो बहुत लेट आया था। बहुत लेट मतलब मेन से बहुत पहले, मतलब बहुत जल्दी ही आ गया था। 15 Yeah. डेज़, आई थिंक 5th ऑफ नवंबर को ये शायद रिजल्ट आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। Yes, yes, yes. 19th को एग्जामिनेशन था। सो प्रीलिम्स के Yeah. बाद क्या लगा था? हो जाएगा सिलेक्शन या फिर आप अपनी प्रैक्टिस में लग गए थे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने उतना नहीं सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बट आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक. लेट्स टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. So ओके। not एंड very much देन high. और इसका जब फेज़ 2 हो गया था, उसके बाद कैसी फीलिंग आई थी जब आपने एग्ज़ाम लिखा? फेज 2 का आई विल जस्ट गो बैक अ बिट. दैट फेज 2 हुँ, जब देना था, तब मेरे दिमाग में ख्याल भी आया कि शायद मैं इसके लिए अगर प्रिपेयर कर लेता अच्छे से, तो हाँ, फेज 2 में आई वुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर, फिर कि अच्छे से मैं दे सकता था. सो बट पेपर देने के बाद मुझे फेज 2 के बाद लगा कि यार गया है, इट वाज डिसेंट बट नॉट वेरी एक्सीलेंट. एक होता है ना, आपको खुद पे भरोसा होता हुँ, है कि निकल ही हुँ, जाएगा. ऐसा भरोसा तो नहीं था सर, बट आई वाज प्रीटी व्हाट कैन वी satisfied, I can say, कि सैटिस्फाइड। yes, you have given it your bit. And fortunately again, एंड just a minute, that my हाँ, typing skills were also slightly decent. So I was able to complete most of the answers. But ESIRD में कुछ 50 या 100 words, I can say 100 words का छूट गया था. So still it ओह! was a, yeah, still it was a pretty yes no situation कि होगा नहीं होगा, let's see. That is what I was about to ask, कि this satisfactory kind of feeling was because of ARD or because of ESI? It was because of English, sir, in phase 2. Okay, Yeah, why because English? English is of 100 marks, Hmm, and I consider myself as someone who has a decent skills in English, who can speak well, or hmm, decently, who can write well, articulate hmm, his thoughts well.
So with that skill and with the letter writing essays and all, I have practiced it before as well. उसके वजह से मुझे लगा कि यार इंग्लिश में आई कैन स्कोर अबव पार, बट इन ESI ARD स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव आई नो दैट आई विल लैग बिहाइंड. So maybe somehow it got balanced, I think. सो ARD मतलब ARD और ESI में अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा आपको बेटर फील लगा था, या फिर किसमें लगा कि इसमें प्रिपरेशन और हो सकती थी? Sir, there are four topics: economic issues, social issues, agriculture, and rural development. Good. Apart from agriculture, all three में I was very comfortable because economic and social issues I read on day-to-day basis, newspaper and other. And rural development I had some background as well. But in agriculture, थोड़ा सा depth में मुझे उतना नहीं पता था. But fortunately, in rural development also, there was a subsection of agriculture because agriculture constitutes chunk of rural development. So agriculture was the toughest, if you can say, and ESI was the easiest of these four. Easiest. Yeah. Okay. Then after the result of mains, फिर कैसे शुरू किया इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना? Yeah, here I want to elaborate that the day when the result of mains came, तब से लेकर तो इंटरव्यू तक डेडिकेटेडली 1.5 months, 1.5 months were there. तब मैंने I left no stone unturned, sir. Daily I used to practice. In my library, a fellow was there who was also for NABARD interview. We prepared mocks with each other. We took each other's mocks. Okay. There's many other mock interviews I gave, 5 to 6 in total. And the transcripts were there, as well as annual report of NABARD, along with the SFP, PLP, and NABARD's website. These were the major chunks of my preparation. And I tried to dwell upon the interview transcripts as well, कि किस तरह के question पूछे जाते हैं. And some part of current affairs was also prepared. Okay. So you put more focus, after your phase 2. Definitely. Prior to that, we can say it was kind of serendipity. कि बाकी एग्जाम के साथ लगे रहो, मतलब डेफिनेटली हार्ड वर्क वाज देयर, तब इतने लंबे टाइम करना, और इस पूरे बीच में लगता था कि मतलब एक जॉब तो होनी चाहिए, बिकॉज अ काइंड ऑफ प्रेशर जनरली वी फील व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग, तो वैसा कुछ लगता था पेरेंट्स की साइड से या फ्रेंड्स की साइड से? सर प्रेशर तो रहता है सर, नॉट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, बट एक इंटरनल प्रेशर आपका खुद का भी रहता है. दैट फीलिंग टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड अदर वेज, वो भी एक लगता है सर. और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे जाते हैं, थकान भी आपको आती है, दैट फटीग किक्स इन. सो तब आपको कुछ ना कुछ हाथ में चाहिए होता है एज ए करियर अपॉर्चुनिटी. एंड एक बहुत अच्छी कहावत है इसमें कि जिस जिस मकाम को आप अंजाम तक ना पहुंचा पाओ, जिस चीज को आप अंजाम तक ना पहुंचा पाओ, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. So I think that is very true. So government service is definitely a good thing to do, but there are other career opportunities as well if one has interest in. So that also needs to be searched. And NABARD is because NABARD, RBI, and also other developmental financial institutions are involved in the planning. So more or less, we can say kind of similar work they have, but in the limited area. We cannot compare it with the definitely with an IAS, but still they have their own, what we can say कि एक रुतबा है और काम है, मतलब जो पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जो आपको खैर जाने के बाद वहाँ काफी पता चलेगा. एंड उसी वजह से मैं भी इंस्पायर हुआ था नाबार्ड के लिए. एंड डीडीएम्स जो मीटिंग लेते हैं ना ब्लॉक लेवल में, इवन द डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स उनके नीचे होते हैं, मतलब इवन द पीसीएस ऑफिसर्स एंड ऑल. वो ही काफी एक अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम पे डीडीएम की. तो खैर more or less In we can fact, say I will just want to add here, sir, कि NABARD is also a very progressive organization. If you see, yes, indeed. the work culture is really very, better as compared to other some organizations. तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है. एंड एक मेजर चीज आप देखे होगे ना, इसमें एक बहुत डायनामिक पार्ट है, इसके फंक्शंस में भी मेंशन्ड है, डेवलपमेंटल फंक्शन में क्लाइमेट चेंज का. अगर आप बाकी सारी चीजें देखोगे तो ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर वर्क है, बहुत ज्यादा. एंड इफ यू विल सी गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग. अभी रूफटॉप सोलर सिस्टम है, वो क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है? व्हाई गवर्नमेंट गिविंग द सब्सिडी जस्ट टू बूस्ट द ग्रीन एनर्जी. खैर, तो इस पूरी जर्नी में एग्जाम भी ने कैसे हेल्प किया आपको? सर IXAM के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आई एनरोल्ड आफ्टर द मेंस, आफ्टर द फेज 2.
fact, there was an offer from iXambi, I think, for all candidates that if Yes. you want to pay the full fees or if you don't want to pay the full fees and what sort of. हाँ, So I enrolled it partially. So it was a very ओके। helpful program क्योंकि प्रिपरेशन फेज में पहले ही फाइनेंसेस थोड़े स्ट्रेन रहते हैं, तो उतने में यस, यस। दैट वाज अ वेरी वेलकम जेस्चर फॉर आई एग्जाम भी। एंड मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए सर आई एग्जाम बी के भी और बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी। So mainly हुँ, my reliance on or my support which came from coaching institutes came during the phase of interview only. बाकी phase हुँ, 1 and phase 2 prepared on my own. माय ओन। एंड दैट इज़ बेसिकली वी कैन से ना, ये जो आपकी 2016 से प्रिपरेशन चल रही थी हम्म। ओवरऑल, वो हम कह सकते हैं फ्रूटफुल रही। सो अभी जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे, एंड कई सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम होता है, या कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डायलेमा होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर पाएँगे या फिर नहीं, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी फॉर सो लॉन्ग। सो आप क्या कहना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को? Sir, firstly, yes, it is possible as my case is itself an evidence to it. But हुँ, secondly, it it cannot guarantee you success. Nothing can guarantee you success. So आप डेफिनिटली। दीजिए, आप मेहनत से दीजिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हाफ हार्टेडली प्रिपेयर करके देते हैं। हुँ, मुझे लगता है कि दैट शुड नॉट बी द केस। यू शुड प्रिपेयर होल हार्टेडली। You can focus on two exams at the same time, but that those two should be complementary. कॉम्प्लीमेंट। Just NABARD is there and RBI यस, is there. They are slightly complementary exams if we see. So वो आप कीजिए। एंड सेकेंडली मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। मेरा रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए आया क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत तगड़ी मेहनत की है। सेवन एंड यस, हाफ ईयर्स मैंने उसमें एफर्ट डाला है। सो एज भले ही मेरा नाबार्ड में यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट दिख रहा हो, बट इसके पहले जिंदगी में एग्जाम्स के बहुत से अटेम्प्ट हो चुके हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी factor which is understated by various toppers also, I think, and other people as well. वही वही चीज़ होती है ना, जब हम जो हमारा सक्सेसफुल वाला चेहरा होता है, उसके पीछे जो हम कह सकते हैं बहुत सारे फेलियर्स या वैसे रिजल्ट रहे होंगे जहाँ पे बहुत डिमोटिवेशन हुआ होगा, वो सब हाइड हो जाते हैं बेसिकली। अभी Definitely. तो जनरली क्या होता है, सक्सेसफुल कैंडिडेट या फिर हम किसी को भी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा बचपन से लेके अभी तक सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रही हैं। बट स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होता है, एंड मुझे And लगता है one तभी हर कोई समझ भी पाता है। हाँ, ज़रूर। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि जब फेज 2 का रिजल्ट आता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, तब से लेके इंटरव्यू तक हुँ, लोग थोड़ा सा ना एक लेजरली वे में उसका प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू का। दे डू हाँ, नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। सीरियसली। आई थिंक इंटरव्यू इज अ फेज वेयर 3 कैंडिडेट देते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट होता है। सो एक खुशी की स्माइल होती है, सो 2 आंसू भी होते हैं आपके बाजू। सो वो कैंडिडेट अक्सर रियलाइज नहीं करते हैं। मुझे लगता है वहां पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स करना आर आल्सो चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड ट्रस्ट मी, फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, मेजरली इट इज़ फॉर स्टूडेंट, कि इंटरव्यू का ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ऑल्दो इट सीम्स टू बी फॉर 50 मार्क्स, जो हमें 200 में की कंपैरिजन में कम लगता है, बट जस्ट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, इंटरव्यू इज टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। दे जस्ट वांट टू चेक कि जिसको हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं ये नाबार्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। दोज ओएलक्यूज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज जो नाबार्ड को रिक्वायर्ड है, वो है कि नहीं है। तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन और उसके साथ आती है। मुझे लगता है कि हर किसी को इसको बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो डेफिनेटली। जस्ट बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। अभी आपके आगे के प्लान क्या हैं? अ, सर अभी तो कुछ सीखना है, जैसे कि चैट जीपीटी मुझे आता है, बट उसमें भी अगेन थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एमएस एक्सेल पे थोड़ी कमांड लेनी है। हुँ, एंड फॉलोइंग अभी अगले महीने ट्रेनिंग का बुलावा आया है, तो वहां भी हुँ, जाना हुँ, है। तो यस, लाइफ इज ऑन डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, है डिफरेंट पाथ। जिंदगी में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा सर। बट द थिंग इज कि डेफिनिटली। एक स्ट्रगल खत्म करके दूसरे स्ट्रगल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही स्ट्रगल अगर परसिस्ट हो रहा है तो एक थोड़ा सा ना निगेटिविटी, लोनेस भी आता है। हुँ, आई ये तो थिंक है। वो मुझे जितना लगने की खुशी है किसी जॉब पर, उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थोड़ा सा ना एक लो फेस या दलदल से मैं निकला हूँ। वो भी जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आई एम एंजॉइंग दैट फेज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू learn new things and go forward in life. हुँ, डेफिनिटली, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड अगेन बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। एन्जॉय योर पीरियड, जॉइनिंग से पहले वाला पीरियड ना गोल्डन टाइम होता है। मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से जी लेना चाहिए खुल के, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर जॉइनिंग ना कुछ-कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और आप प्रोबेशन में होते हैं।
सो अगर हम ये मान के जाते हैं कि बहुत छुट्टियां मिलेंगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता ही है। सो एंजॉय योर टाइम, अभी तो काफी टाइम है, नाबार्ड ने इस साल काफी टाइम दिया, अदरवाइज आप प्रीवियस देखेंगे ना तो रिक्रूटमेंट, तो उनमें रिजल्ट की लगभग 10-15 दिन बाद वो स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजें। So ओके। enjoy your time, and again thank you for coming and discussing, and हमारे साथ इस एक wonderful discussion के साथ, and I think students को और खासकर यूपीएससी या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा। So again thank you, Ojas. थैंक यू सर, द फीलिंग इज म्यूचुअल। थैंक